children, we have done planning till the limitations of planning, right? So those who are joining late, I want to tell them ki we are doing the lesson of planning, that is third lesson of BA. We have done till limitations of planning, and now today we are going to look at the planning process. So you can sit with the notebooks, you can take the notes. Okay, let's move ahead. So we are going to look at the process of planning. If this question is asked for 5 marks, every time first you have to write the introduction. So whatever things we have up till now heard many times, those only we are going to write. First thing is that future is uncertain, but planning helps to manage uncertainty. Whatever uncertainty is going to come in future, if you do planning, you can manage it nicely. As it is an intellectual process and thinks of all possibilities. All possibilities are thought about in planning. BLITIES. So planning is a map of future. Why planning is called a map of future? Uska bhi 2 marks ka answer you are getting here. Now, stage-wise implementation of the plan that you make is helpful in achieving the objective, right? तो ये introduction में हमने लिख लिया. Now we are going to go for the actual process of planning. The first and foremost always when we are talking about planning is determination of objectives. So when you are going through the process of planning, first thing what you need to determine, what need to decide is objective, what you want to do. The first thing is setting objective. और objective कैसा होना चाहिए? Pragmatic means realistic, जो कि achievable हो, है ना? झूठे सपने नहीं, सच वाली बात जो हमने मुकेश के टाइम पे बात की थी. When we are doing the English lesson, I want to drive a car. उस टाइम पे हमने सोचा था कि उसने प्लेन की बात नहीं की, कार की ताकि क्या हो सके, वो pragmatic हो सके, realistic हो सके. So realistic objectives help managers to achieve them. Unrealistic objectives उनके सामने रखने चाहिए नहीं. ठीक है, तो पहले तो डिटरमाइन करो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको काम क्या करना है, कौन सा बिजनेस तुमको करना है. नाउ दैट मेन ऑब्जेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज आर प्लान्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है, अभी अगर हम बोलेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि लेट अस टेक अ न्यू एग्जांपल, राइट? सपोज आई से कि ओके, लेट अस टेक एग्जांपल, एक इमेजिनरी नेम ले लेते हैं कि सपोज से शीरिन वांट्स टू सेट अप अ बुटीक. तो पहला ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? What objective she has set? To open a boutique, right? So she has set the objective of opening a boutique, and then the main objective will be divided in secondary objective. कैसे? कि बुटीक खोलना है तो फिर क्या क्या, हर एक जो अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरह से एक एक तुम्हारा क्या हो जाएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. पहला होगा कैपिटल कहाँ से आएगा, वो एक होगा ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग कैपिटल. सेकेंड विल बी टू do the market research. थर्ड विल बी टू अपॉइंट द पीपल, है ना, जो तुम्हारे टेलर्स होंगे. ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की तरह सोच सकते हैं. तो सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स यू कैन ओनली डिसाइड आफ्टर सेटिंग योर मेन ऑब्जेक्टिव. तो ये पहले डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज द फर्स्ट थिंग इन प्लानिंग प्रोसेस. Then the second and the most important is clarifying planning premises. हम जैसे बिल्डिंग को प्रीमाइसेस बोलते हैं, वो यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब है एजम्पशंस. नाउ यू नीड टू एज्यूम कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, राइट? सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बुटीक विच शीरिन वांट्स टू ओपन, व्हाट कैन वी से कि शी इज एज्यूमिंग कि नाउ आई नीड टू स्टार्ट माई बुटीक so that in time when the NRI season comes, my product needs to be ready. So if she works on this assumption, if this assumption is correct, if really in December, January we all know that the NRI season is there. What do I mean by NRI season? Many people living outside India, like some people live in Canada, some live in Australia, some live in USA. They all come to visit India in that
particular period, December, January. So she is planning to open a boutique so that her products can be ready and her first year ka sale can be done very nicely. So she is even targeting, her assumption is that she should make a product to target the NRI clients so that she can make a good profit. That is her assumption, and that her assumption is that the NRI clients are going to buy her product. That is her assumption. Forecasting is done, possibilities are considered. So she needs to consider all the possibilities. मेनली NRI है, दिसंबर है, मैरिज सीजन भी है, ये सब पॉसिबिलिटीज उसको कंसिडर करनी है. फिर फोरकास्ट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइंस शी नीड्स टू मेक. दैट इज़ द फोरकास्टिंग अबाउट हर डिज़ाइंस, अबाउट हर प्रोडक्ट. वो फोरकास्टिंग वो करेगी कि मुझे ऐसे ऐसी प्रोडक्ट बनाने से वो अच्छी तरह से बिकेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटीज़. Now internal and external factors affecting the business need to be considered to decide planning premises. इंटरनल फैक्टर्स में शीरिन के लिए कौन कौन से होंगे? इंटरनल में कैपिटल कहाँ से आएगा, इंटरनल में वो उसके वर्कर्स होंगे, उनको कैसे वो मैनेज करेगी. एक्सटर्नल में व्हाट विल बी द टैक्स दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू पुट ऑन वॉट एवर रिसोर्सेज शी इज़ गोइंग टू परचेज. रॉ मटेरियल होगा, है ना, वो सब चीज़ें होंगी. या फिर एक्सटर्नल फैक्टर में जो उसका कंसिडरेशन है कि NRIs आएंगे. तो देखो इस बार क्या हो जाएगा, अगर हम सोचेंगे कि दिसंबर तक तो फिर भी ठीक ही चला था, दिसंबर के बाद ही इंडिया में बढ़ गया था. लेकिन यही चीज़ अगर दिसंबर के पहले होती तो उसका जो पूरा एजम्पशन ही क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता. क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक नोबडी इज़ नाउ विजिटिंग एनी कंट्री. US वाले यहाँ नहीं आ रहे, हम वहाँ नहीं जा रहे. तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स का उसको सोचना चाहिए. मेनली ये पैंडेमिक तक बहुत अलग बात हो गई है. इवन देन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, टैक्स की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, या रॉ मटेरियल्स के रेट्स की क्या है, उसके बारे में उसको सोचना चाहिए. या उसको अगर कोई रेंट पे लेना है तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है. तो अवेलेबिलिटी उनकी क्या है, तो वो उसको सोचना चाहिए और उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा. तो एक NRI सीज़न भी उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसके लिए कैसे वर्क करने वाला है पॉजिटिवली. ठीक है. तो आफ्टर डिसाइडिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, ये उसने एजम्पशन कर ली. तो दीज एजम्पशंस हैव टू बी करेक्ट. इफ प्लानिंग प्रीमाइसेस या एजम्पशंस आर नॉट प्रिसाइज करेक्ट, देन प्लानिंग में फेल. So if she decides कि I'm going to target the NRI people and she manufactures only sarees, so then her planning may fail because they will not be, they may buy some sarees for occasions, for marriages, but only sarees is not going to work. So accordingly she has to look at all the possibilities. If those assumptions are wrong, then the planning may fail. Collection and analysis of information. Okay. For this particular point, let us talk about Shireen again. What she needs to do next, she needs to collect all the information regarding her raw material, which raw material she is going to use, what are the rates. She needs to visit the different boutiques, right? And she needs to find out what is in, what is in fashion, that she needs to find out. तो ये कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो, स्टडी करो. आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसेस, नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इफ यू गो टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, देन what you can say, you are collecting the information directly. If you go to the boutiques to find out from the other competitors कि what kind of fashion is in, then you are collecting the information indirectly. तो दोनों तरीके से you can collect the information, then you can classify कि जो information gather की है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी है, फाइनेंस के लिए नेसेसरी है, कि तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है ना, कि तुम्हारे सेल्स के लिए नेसेसरी है. तो ये सब चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करो, फिर उसको इंटरप्रेट करो. अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट इज़ टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, स्टडी इट एंड देन एज्यूम प्रिसाइसली. देन यू एज्यूम क्योंकि ये चलेगा, ऐसा बनाना चाहिए. ये सब चीज़ों को हम बोलेंगे कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. देन यू प्रिपेयर द अल्टरनेटिव प्लान. तो फिर अल्टरनेटिव प्लान्स आप बना लोगे.
अल्टरनेटिव प्लान्स में शीरीन के लिए क्या हो सकता है कि डज शी नीड टू काइंड ऑफ ओनली हैव सिल्क प्रोडक्ट्स or does she need to have cotton also? So all these things she needs to decide for the alternative plans. She can decide whether she needs to manufacture sets or whether she should go for mix and match kind of costumes. So all these alternative plans she needs to prepare, and then after preparing the list of alternative plans, what she needs to do, list of alternatives about each activity she needs to prepare, like whether she needs to rent the place or whether she needs to buy the place or whether she needs to work from home in the beginning. So all these are the list of alternatives, and she has to decide the pros and cons of each alternative. तो ये alternative plans पहले बना लो. जैसे और बुक में एग्जांपल दिया है कि सपोज right now you suppose Shireen cannot even go into producing or manufacturing any garments. She doesn't have that kind of money, so she can start by just purchasing some garments from others and sell it to the NRIs by directly contacting them. अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो instead of producing, instead of making, she can even go for just purchasing. सिर्फ ट्रेडिंग ही कर सकती है वो एक साल के लिए. सिर्फ ट्रेडिंग कर लिया, पैसे जमा किए, next year she can go for actually making or manufacturing. So these are the alternative plans that one needs to consider. Okay, so what we are doing the planning process, and we have understood the first thing we need to do is set the objective. After setting the objective, determining the objective, we need to clarify the planning premises. Premises are assumptions. Forecasting, we need to do forecasting कि चलो ऐसा ऐसा possibilities है और ऐसे ऐसा हमको करना पड़ेगा. देन वी नीड टू, जो हमने डिसाइड किया है कि ओके दिस इज आवर अजम्पशन, अकॉर्डिंगली वी नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टेप, फॉर ईच एक्टिविटी वी नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड देन वी नीड टू क्लासीफाई, इंटरप्रेट एंड स्टडी इट, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द अल्टरनेटिव प्लान्स. आफ्टर प्रिपेयरिंग द अल्टरनेटिव प्लान्स, like whether to produce or to purchase, what we have to do? Up till now you understand. After preparing the alternative plan, next we have to evaluate the alternatives. Evaluate करना मतलब examine करना. You have to evaluate each and every alternative. हर alternative को क्या करो तुम, examine करो. Feasible, only workable alternatives are evaluated. जो feasible हो, जो workable हो, वो alternatives को ही तुम consider करना. ठीक है, तो ऐसे वर्केबल, फिजिबल, रियलिस्टिक अल्टरनेटिव्स को ही तुम इवेल्युएट करो. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर स्टडीड फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. नाउ इफ Shirin decides कि आई वांट टू मेक ओनली प्योर सिल्क, तो व्हाट विल हैपन? प्योर सिल्क kind of is very in turn it becomes costly because every time you have to just kind of dry clean it. So because it is her first time, then she needs to consider the pros and cons. What are the positive parts of making only pure silk? What are the negative parts of making only pure silk clothes? So these pros and cons she can decide. Okay, so whether she needs to go for little bit mix of silk plus polyester or silk plus cotton or whatever. So that kind of all those decisions she needs to take. So only high rate or middle rate, low rate, whatever kind of costume, because she is targeting NRIs, she need not go for low rate, but she needs to give them quality product as well as many other varieties she needs to give them, right? So according to the whatever design she is making, which cloth will hold the flow of the costume, accordingly she needs to take her decisions. So pros and cons, positive and negatives of each alternative are to be studied, and selection of the best alternative, what will give her more profit. Okay, so all those things she needs to study. Factors affecting business units are considered, उसमें internal भी और क्या होता है external भी. Operation research, evaluation of alternatives के लिए main चीज़ क्या है? Operation research. After doing the operation research, after evaluating each plan, then you have to prepare the
मॉडल प्लान. ऑपरेशन रिसर्च से क्या होता है, एक मॉडल प्लान बनाते हैं. अगर रिसर्च की हम बात करें, जब हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करो, तो आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल and that is of Divya Bhaskar. So this paper was not there some 10 years back. It is in Ahmedabad since 10 to 12 years. So initially what they did, I will tell about collecting information, how seriously they did it. At that time only Sandesh and your Gujarat Samachar were there in Gujarati newspaper, right? So when Divya Bhaskar team came, they sent all the young children just out of the college, or just teens, all children in their teens. They gave them a cycle and they gave them a t-shirt, they gave them a cap on which Divya Bhaskar was written, and in the beginning they just gave this advertisement on the hoarding, something new is coming, कि કંઈક આવે છે એટલી જ એડવર્ટ. તો people, they aroused the curiosity of the people. That was the first time anybody gave such an advertisement, કે શું આવી રહ્યું છે, એ ટાઈપની કંઈ એડવર્ટાઇઝ હતી એ લોકોની. And then these children started going to each household wearing their t-shirts of Divya Bhaskar and caps and a questionnaire. I'm talking about gathering information, and a questionnaire about which newspaper they read, what they like about it, what they don't like, and what are the changes that they want, what are the things that they would like to read. तो ये पूरा उन्होंने कलेक्ट कर लिया. तो उनका पूरा मार्केट सर्वे, ऑपरेशन रिसर्च, उनका इतना अच्छे से उन्होंने रिसर्च कर लिया. And then when they came to know the drawbacks of Gujarat Samachar and Sandesh, they launched their newspaper, Gujarati newspaper, according to the wishes of the customer. Now they contacted the customer directly. See here they got the information directly, and then they gave when they launched Divya Bhaskar, every single day they gave the paper along with a supplementary reading magazine, small thin one day about small children, one day about women, one day about health, one day about your films. All those 7 days they gave 7 different, one day about science. So all 7 different days, they one day about business, something like that. They gave 7 different magazines. So एक जो एकदम फेमस जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके, संदेश और कौन सा दूसरा मैंने बोला, गुजरात समाचार. तो there was no place for them, but they made their place. They made their place because they did this research very well. Market research, operation research उन्होंने इतना अच्छे से किया. And after that their model plan they prepared with 1 magazine per day along with the newspaper. Okay, so those were their calculations and estimations. And then so it is called intellectual process, and they succeeded like anything. Even Sandesh and Gujarat Samachar had to launch magazines to टिके रहने के लिए. उनको भी मैगजीन्स देने पड़े, अदरवाइज सब लोग दिव्य भास्कर ही लेना शुरू कर देते. तो ये इसका इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिसर्च का. और ये इन्फॉर्मेशन तुम डायरेक्टली कलेक्ट करो, इनडायरेक्टली कलेक्ट करो. तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दैट एग्जांपल, एंड इट इज़ इंडीड ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि उसी के ऊपर से आपको एस्टिमेशन बनाने, खर्चा कितना लगेगा, तो उसके लिए पूरे कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं. And then, so we are talking here about selecting the best alternative. So which alternative did Divya Bhaskar select? About giving the different magazines along with the newspaper. So best plan is selected क्योंकि उनको तो market काबिज करना था ना. They were the new players in the market, and they captured majority part of the market because they were like old people in the newspaper industry, so they could do it. तो ये जब आप बेस्ट प्लान सिलेक्ट करोगे तो आपको एकदम स्क्रूटिनी से करना है. स्क्रूटिनी से करना मतलब क्या, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से करना है. अपने आप के क्रिटिक्स बन के हर चीज़ को आपको, हर चीज़ का नेगेटिव एंगल आपको ज़रूर से देखना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. तो जिसके कम से कम नेगेटिव एंगल्स हो उसको आप सिलेक्ट करो. तो क्या बोल रहे हैं कि ईच अल्टरनेटिव इज़ इवेल्युएटेड एंड एनालाइज्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. So that is your 6th step. Evaluate the alternatives and then select the best alternative, right? So here we are going to stop.
and then you should take the notes. You should kind of write them in your notebooks and start preparing. Okay, so we are going to also have a Zoom lecture in which we will again discuss about the process of planning in a fun way. Okay, so we're going to stop here. See you next time.